All right, guys, everyone. So basically, last time we left on question 5, right? And now it's question 6. Sir, could you please let me in from another device? Just a moment. Yes, I have. Okay. It's question 6, guys. इसके 6 marks हैं, and I'm giving you exactly 4 minutes to complete this question. 4 minutes. Or 4 minutes means 4 minutes. Take care. My stopwatch will start as well. After 4 minutes, we'll start discussion of question 6. You can please make sure that integrity is not compromised. Your stopwatch starts now. The 4 minutes start, please, everyone. Okay, have you done anything till the class started? No. So we're starting it now. So it's question 6. The 4 minutes for this question start now, please, everyone. To get it blocked up. And when Stalin died in 1953, his underlings scrambled to
अजान हो रही है. All right, guys, everyone, the time is up. Now, what is the meaning of the term weak in weak acid? बताएं जी, weak in weak acid. Partially ionized. Brilliant. So basically, weak. नहीं सर, ये तो एसिड का पूछ रहा है. दूसरा अगले क्वेश्चन part. Sorry, acid की पूछा. Sorry. सर उसका होगा H plus ions when मैं dissolved. यहाँ लिख मैंने यहाँ लिखने basically weak. तो weak means अगर partially ionizes, or acid which donates H positive ions in aqueous solution, which ionizes to H positive ions in aqueous solution. Okay, what is meant the term acid in weak acid, which releases H positive ions in aqueous solution? So acid, dissociates and releases H positive ions in aqueous solution. Now, what's the meaning of the weak in weak acid? A substance which partially ionizes. अच्छा वैसे by the way, ये acid को आप ये भी लिख सकते हैं कि an aqueous solution which has H positive ions. ये भी ठीक है, right? Weak का मतलब क्या है? A substance which partially ionizes. An acid which partially ionizes. An acid which partially ionizes या dissociates in aqueous solution. फिर अगर हम ए पार्ट में लिख लें कि वीक एसिड होता है which partially ionizes in aqueous नहीं, वो तो गलत हो जाएगा ना, वो तो गलत हो जाएगा. ए पार्ट एसिड है और आपका सेकंड पार्ट इज वीक. Yes, Ayan, it's correct. So describe how universal indicator can be used to find pH of the can be used to find the pH of this propanoic acid. बताएं जी, how universal indicator can be used to find pH? पहले हम उसको डिप करेंगे एसिड के अंदर, फिर उसके बाद पेपर का कलर मैच करेंगे चार्ट के साथ. तो सर ये वीक एसिड है तो इसका 3 to 6 मतलब इसके बीच में. Brilliant. So basically what we'll do is that we will add universal indicator to propanoic acid and match the color change with the pH chart. So add universal indicator to propanoic acid and match the color of solution with the pH chart. So give a large scale use of calcium hydroxide that depends on its basic character. Sir, paper industry. Fertilizers. Hydroxide ये LP है ना. It is used as the inner lining for the glass bed. सर फर्टिलाइजर भी यूज होता है. हाँ, Liming. soil की treatment के लिए होता है, liming के लिए होता है. Soil की treatment. It is to neutralize acidity of soils. हम सिर्फ न्यूट्रलाइजेशन लिख सकते हैं. नहीं. So to neutralize acidity of soils. जिसको हम liming भी कहते हैं, liming process. जी. सर ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर वाला सवाल है इसके अंदर हम पेपर और सॉल्यूशन दोनों लिख सकते हैं, मतलब उनमें से कोई भी दोनों लिख सकते हैं. Solution ऐड करते हैं, पेपर ऐड करते हैं. It doesn't matter. Okay, the calcium oxide reacts with water to form calcium hydroxide. The reaction is exothermic. Use ideas about bond breaking and bond forming to explain why the reaction is exothermic. मुझे बताएं 2 marks हैं, तो ये 2 marks की disintegration क्या है? First mark किसका होगा? सर पहले आप bond breaking is endothermic, whereas bond making. ठीक है, agreed. The first mark is bond breaking is endo and bond making is exo. ठीक है, और second mark? That this reaction is exothermic as more heat is given out than taken in. Brilliant. So basically, bond breaking
is endothermic and bond making is exothermic, right? The reaction, energy released is more than energy, heat required. Therefore, the reaction is overall exothermic. Yes, Aska, we can say that. Can we write the energy released while bond breaking is greater than the energy released while bond forming? Energy required while bond breaking is lesser than energy released while bond forming. Yes, absolutely right. Maybe ठीक है. सर आप दोबारा रिपीट करेंगे भी आपने क्या बोला था? यानी कि energy required while breaking the bonds is lesser than energy released while the bonds are formed. ऐसे भी ठीक है. सर मुझे बताएं मैंने ठीक लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? In this बताएं. reaction, energy released to make bonds is greater than energy absorbed to form the bonds. नहीं, एक दोबारा बोलो. In this reaction, energy released to make the bonds is greater than energy absorbed to form the bonds. नहीं. The energy absorbed to form the bond and break the bonds. ठीक है. ओके सर सही है सर. बाकी सही है सर. बाकी ठीक है. चलिए जी. It's question 7 guys. तो question 7 के मार्क्स हैं यहाँ पे 10. Right? And the time I'm allocating is 7 minutes. 7 minutes sharp, right? Stopwatch शुरू हो जाएगी. Okay. So your time starts now. सर एक सवाल था मेरा. पूछें. सर वो जो आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर वाले क्वेश्चन में हमने कहा है कि उसको पीएच उसके साथ मैच करना है. यूनिवर्सल इंडिकेटर में हम मिथाइल ऑरेंज का भी डिस्कस कर सकते हैं या नहीं? नहीं. सर वो यूनिवर्सल इंडिकेटर नहीं है वो जो आपने बताया थे. यूनिवर्सल में तो कुछ और होता है. एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है फिनोल्फथलीन, एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक होता है एक होता है लिटमस सॉल्यूशन, एक होता है थाइमोल ब्लू. ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं. जी सर. ओके. तो यहाँ पे वो आपसे यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम कनेक्ट करते हैं पीएच चार्ट से. राइट सर. ओके. क्विक गाइस.
20 more seconds to go, guys. Okay, it's up. नो दानियाल लाजमी नहीं है, सेक्शन में भी आता है मोल्स। वो कहते हैं जी अमोनियम कार्बोनेट इज अ वाइट सॉलिड व्हिच डिकम्पोजेस व्हेन हीटेड। आप देख रहे हैं, अ सैंपल ऑफ अमोनियम कार्बोनेट इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, डिस्क्राइब हाउ यू विल नो व्हेन ऑल अमोनियम कार्बोनेट हैज डिकम्पोज्ड। जी Sir, ammonia gas is given. When nothing is left in the White tube. solid. Sir, when the White white solid solid is completely disappears. कार्बन डाइऑक्साइड हाँ। के बस Carbon dioxide. No bubbles of CO2 gas. नहीं नहीं, अच्छा मुझे इसलिए मैंने इसलिए नहीं 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 Sir, when nothing is बेसिकली left in the test tube. सर टेम्परेचर राइज से मेजर हो जाएगा। नहीं, बेसिकली याद रखें, अगर मुझे किसी ने ये कहा है कि एफरवेसेंस नहीं होगी, गलत। Sir, when there is nothing left in the test tube. हाँ, व्हाइट सॉलिड डिसअपीयर्स क्योंकि बाकी तो गैसेस बन रही हैं। एफरवेसेंस वहां पे होती है जहां पे आपके पास एक सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में बबल्स निकल रहे हो, वो एफरवेसेंस होती है। यहां पे व्हाइट सॉलिड विल डिसअपीयर। यस मूसा, यस। सो बेसिकली व्हाइट सॉलिड विल डिसअपीयर। So white solid शुरू में पड़ा हुआ है. chemical starts to fade away. हाँ, ये देखिए, ये स्टार्ट में पड़ा है व्हाइट सॉलिड। देखे ना, आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने ये व्हाइट सॉलिड रखा हुआ है जिसको आप हीट कर रहे हैं, और मसला ये है कि हीट होने के बाद सारी गैसेस बन रही हैं, तो भाई पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन खत्म हो गया, व्हाइट सॉलिड ही खत्म हो गया, राइट? अच्छा, आपने कहा कि व्हाट अबाउट कांस्टेंट मास इज अचीव्ड। फाइन, लेकिन फिर आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा करना पड़ेगा कि आप उसका मास मेजर कर रहे हैं। I mean, it'll be too lengthy of an explanation. ठीक है, I think the easier answer is that white solid will disappear. Would it be correct to say the volume of gas collected is constant? No. आप तो उसने तो बताया नहीं आप वॉल्यूम कलेक्ट कर रहे हैं, right? तो white solid will disappear, guys. So it is what is required. Okay, then calculate the total volume of ammonia and carbon dioxide measured at RTP when 4.8 gram ammonium carbonate is completely decomposed. So पहले आप moles निकालें इसके, ठीक है? तो moles is equals to 4.8 divided by, अच्छा molecular mass क्या होगा इसका? तो 14 into 2 plus 8 plus 12 plus 48, 96. Brilliant. 0.05? जी सर, 0.05। अब मुझे बताएं, ये मोल्स आ गए अमोनियम कार्बोनेट के, तो मोल्स अमोनिया कितने होंगे? अमोनिया के मोल्स होंगे 0.1 तो 0.05 into 2 तो 0.1 मोल। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया क्या होगा? 0.1 multiplied by 400. And that is 2.4 decimal 2.4 dm³। अब सिमिलरली मोल्स ऑफ CO2 सर उसके 0.05 हो एग्जैक्टली, क्योंकि वो 1:1 में है, तो उसके मोल 0.05 भी होंगे। तो वॉल्यूम कितना होगा? 0.05 into 24, ये कितना आ रहा है? नहीं सर, 0.24 आ रहा है। क्या ये 1.2 आ रहा है। 1.2 ही आ रहा है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 2.4 plus 1.2, 3.6. ब्रिलियंट। तो 3.6 dm³, guys। सर यहीं पे 3600 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं, ये मैंने अमोनिया सेपरेटली कैलकुलेट किया है और मैंने CO2 सेपरेटली कैलकुलेट किया है। आप ये भी कर सकते हैं कि अमोनिया और CO2 के मोल मिलाते कितने हो गए? 3 हो गए। आई मीन 2 + 1 3, ये 2 + 1 3। तो फिर अमोनियम कार्बोनेट एंड द गैसेस आर इन 1:3। आप ये भी कर सकते हैं।
ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट एंड गैसेस आर इन 1:3। अगर इसके 0.05 हैं तो इसके हो जाएंगे x, तो x इक्वल्स टू 0.15 मोल। तो 0.15 को मैं मल्टीप्लाई करूं इंटू 24 से, तो आंसर इज 3.6 dm3, राइट। तो आप ये भी कर सकते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। नो सेरीन, आप पार्ट ए में एफरवेसेंस नहीं लिख सकते, क्योंकि एफरवेसेंस पता क्या होती है? एफरवेसेंस इज एक्चुअली बबल्स का बनना। तो अगर बबल्स का बनना है, इसका मतलब है कोई चीज लिक्विड है, सॉल्यूशन लिक्विड हो, तो वहां पे कोई गैस बन रही हो और आपके बबल्स बन रहे हो, फिर आप एफरवेसेंस कहते हैं। खाली सिंपल गैसेस बाहर आ रहे हैं, आप उसको एफरवेसेंस नहीं कहते। स्ट्रॉन्ग। डिस्क्राइब अ केमिकल टेस्ट फॉर द अमोनियम आयन। तो गाइस, अमोनियम आयन में आप बेस डालेंगे, उसको हीट करेंगे, तो अमोनिया गैस निकलेगी विच टर्न्स डैम्प रेड लिटमस ब्लू। तो टेस्ट क्या होगा? Add NaOH to ammonium ion solution and warm करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। इधर एल्यूमिनियम फॉयल नहीं डालते, एल्यूमिनियम फॉयल नाइट्रेट के लिए होता है। फिर क्या होगा? यहाँ पे अमोनिया इज रिलीज्ड which turns बताएंगे कि abundance नहीं, no, you can use any other base like you can use potassium hydroxide, लेकिन बेस का नाम लिखना है, ये नहीं लिखना add base। तो बाय द वे इसका रिएक्शन क्या होगा? अमोनियम आयन रिएक्ट्स विद OH नेगेटिव टू गिव यू अमोनिया एंड वाटर। Can you explain this a little? देखो, जब अगर आपको याद हो तो हम आपको बेसिस के चैप्टर में पढ़ाते हैं, अमोनियम सॉल्ट्स बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर अमोनिया गैस देती हैं। तो टेक्निकली अमोनियम आयंस हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहे हैं ना, और आपको अमोनिया दे रहे हैं। तो अमोनियम आयन आपने जब भी टेस्ट करना है, आप उसमें बेस डाल के अमोनिया बाहर निकालते हैं। जिस तरह जो कार्बोनेट होता है, उसको टेस्ट करने के लिए आप एसिड डाल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। सिमिलरली अगर आपने अमोनियम टेस्ट करना है, तो आप उसके अंदर बेस ऐड करेंगे, अमोनिया बाहर निकालेंगे और अमोनिया को टेस्ट करेंगे टू कंफर्म फॉर द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयन। और वार्म हम इसलिए करते हैं ताकि रिएक्शन जल्दी हो जाए, अदरवाइज इट टेक्स टाइम। फिर ये जो हमने पढ़ा था, क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस वाला चैप्टर, उसके अंदर Yes, से लिखा yes. हुआ था, जब हम लोग पढ़े थे क्या टाइम का, इसमें तो था नो प्रेसिपिटेट। तो फिर हम लोग इसका ये लिख सकते हैं कि हम लोग add NaOH to ammonium ion solution and warm and no precipitate forms। नहीं, वो वहां पे नो प्रेसिपिटेट लिखा तो हुआ था, लेकिन उसके बाद वहां पे ये भी लिखा हुआ था कि अमोनिया गैस इज लीव स्टेंस डैम्प्ड इन ब्लू। ओके ओके सर, सही है। गैस का टेस्ट लिखना है इसके साथ। Aqueous ammonium carbonate reacts with dilyl hydrochloric acid, construct the ionic equation and including state symbols। अगर आपको याद आ जाए मेरी बातें, मैंने ये आपको बताया भी था, जब अमोनियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा HCl से, तो जाहिर बात है जो कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, अमोनियम तो ऐसे कैसे रहेगा, ये अमोनियम क्लोराइड बन जाएगी प्लस CO2 प्लस H2O। तो टेक्निकली क्या हुआ? तो टेक्निकली अब कार्बोनेट आयंस रिएक्ट किए H पॉजिटिव आयन साथ, क्योंकि कार्बोनेट इज -2, तो H पॉजिटिव have to be 2 to balance it out। It gives you carbon dioxide and water। कार्बोनेट क्या है? एक्वस। ये क्या है? एक्वस। ये गैस है, ये लिक्विड है। और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैंने वैसे ये आपको पढ़ाया भी हुआ, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आपको। अमोनियम कार्बोनेट एक एम्फोटेरिक सॉल्ट है। अमोनियम कार्बोनेट एक एम्फोटेरिक सॉल्ट है। ये एसिड से भी रिएक्ट करेगी, ये बेस से भी रिएक्ट करेगी। बस फर्क इतना, जब ये एसिड से रिएक्ट करेगी तो कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, जब ये बेस से रिएक्ट करेगी तो अमोनियम आयन रिएक्ट करेगा। इसलिए अमोनियम कार्बोनेट इज टर्म्ड एज एन एम्फोटेरिक सॉल्ट। आयोनिक इक्वेशंस में हमेशा वो आयन लिखे जाते हैं जो कि टेक्निकली रिएक्ट कर रहे हो। इफ आई एम सेइंग दैट कि
अमोनियम कार्बोनेट इज रिएक्टिंग विद एन एसिड, राइट आयोनिक इक्वेशन, तो एसिड में से हमेशा H पॉजिटिव आयंस रिएक्ट करते हैं और अमोनियम कार्बोनेट से कार्बोनेट रिएक्ट करेगा, क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है कि एसिड 4 चीजों से रिएक्ट करता है, विद मेटल, मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड अ कार्बोनेट. So therefore in the ionic equation I've written only carbonate from ammonium carbonate and H positive ions from acid. एम्फोटेरिक क्या होता है कि जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करे. अमोनियम कार्बोनेट एक एम्फोटेरिक सॉल्ट है क्योंकि इट विल रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस. जिस तरह अमोनियम कार्बोनेट में से जो कार्बोनेट है वो एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, अमोनियम ऐसे ही रहेगा, और अमोनियम कार्बोनेट में से अमोनियम बेस से रिएक्ट कर जाएगी और फिर कार्बन ऐसे ही देगा. तो इसका मतलब है कि एक सॉल्ट एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर सकती है. गाइस फिर इसमें से स्पेक्टेटर आयन कौन सा होगा, ये जो पिछला सवाल है डी पार्ट के अंदर. ये बनाने लगा. This gives you ammonium chloride plus CO2 plus H2O. I was writing the acid part थोड़ा ऊपर पे. एक सेकेंड बस. Ammonium carbonate plus NaOH, it gives you sodium carbonate plus ammonia plus water. आयोनिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं? अमोनियम कार्बोनेट का मतलब क्या है कि इसमें अमोनियम आयंस हैं और इसमें कार्बोनेट आयंस हैं. HCl का मतलब क्या है कि इसमें H पॉजिटिव आयंस हैं और क्लोराइड आयंस हैं. फिर ये अमोनियम कार्बोनेट तो वो नहीं होगा, उसका कितने सॉलिड, तो एक्वस है, उसने एक्वस का है ना. ओ, सही. अमोनियम क्लोराइड एक्वस का मतलब क्या है? इसमें अमोनियम आयन है और क्लोराइड आयन है. CO2 इज अ मॉलिक्यूल, वाटर इज अ मॉलिक्यूल. अब मुझे एक बात बताएं, रिएक्शन से पहले भी अमोनियम है, बाद में भी अमोनियम, तो काट दें. रिएक्शन से पहले भी क्लोराइड है, बाद में क्लोराइड है, इसको भी काट दें. रिएक्शन से पहले कार्बोनेट है, बाद में नहीं है, तो आयोनिक इक्वेशन में आ जाएगा. रिएक्शन से पहले H पॉजिटिव आयन है, बाद में नहीं है, ये भी आ जाएगा. CO2 and H2O, तो ये बन जाएगा आयोनिक इक्वेशन. बैलेंस कर ले तो it's 2H पॉजिटिव, क्योंकि अगर CO3 is -2 तो H पॉजिटिव have to be 2 to balance charge. इधर आ जाए. अमोनियम आयन एंड कार्बोनेट, Na plus and OH negative is NaOH. सोडियम कार्बन का मतलब क्या है? इसमें Na plus है और कार्बोनेट है. अमोनिया इज अ मॉलिक्यूल, वाटर इज अ मॉलिक्यूल, राइट. रिएक्शन से पहले आपके पास कार्बोनेट है, बाद में कार्बोनेट है. नहीं, ये रिएक्शन एसिड के साथ है, ये बेस के साथ है. ये मोलेकुलर इक्वेशन है, ये आयोनिक इक्वेशन है. आगे आ जाए. सोडियम आयन पहले भी था, बाद में भी है, वो भी काट दें. तो क्या बचा फिर? अमोनियम आयन is reacting with hydroxide ion and giving you ammonia and water. So this is the ionic equation for NaOH reacting with ammonium carbonate. तो आपने एक बात पे गौर किया कि अमोनियम कार्बोनेट जो है बेसिकली इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस. अगर वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, बेस से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया गैस रिलीज करेगा. जी अरहम, वो आप इक्वेशन बैलेंस कर सकते हैं. सर एक सवाल था सर, आपने H2O को क्यों नहीं और NH3 को क्यों नहीं ब्रेक डाउन किया? बेटा वो मुझे बताएं कि NH3 तो मॉलिक्यूल होता है. सर मॉलिक्यूल्स को हम नहीं करेंगे ना. नो. Acid reacts with 4 substances. One is metal oxide, metal hydroxide, and metal carbonate. Part E, solid ammonium carbonate solid ammonium carbonate does not conduct electricity. Aqueous ammonium carbonate conducts electricity. Explain these 2 observations. In solids, ions cannot move. Brilliant. मैं भी ऊपर कर देता हूं इसको. So basically solid ammonium carbonate में ions cannot move, लेकिन aqueous ammonium carbonate में they are free ions.
right? So basically, in solid state, ions cannot move, whereas ions are free in aqueous solution, and इसको 2 marks. Free के word होना बहुत जरूरी है, free ions. G. Daniel, you should not write the word delocalized. Delocalized is not a word required for ions, please. Swipe up, please. Okay. Can we write ions can move instead of free? Fine, like in free is actually a term which we require in chemistry. Thank you, sir. No problem. Shall I move on? Yes, mobile is the right term. We can use mobile ions, free ions, like not actually delocalized ions. It's wrong. Chayan ji. ये हम साथ साथ करेंगे, तो please get ready. With me, you have to answer. A scientist heats a sample of phosphorus 5 chloride in a closed container. A dynamic equilibrium is established. Acha. Describe what is meant by the term dynamic equilibrium. Sir, when rate of forward reaction equals the rate of backward reaction, and sir, amounts of reactants and products become constant. Brilliant. So when the rate of forward and backward reaction becomes constant, and the concentration, yeah, amounts of reactants sorry. When the rate of forward reaction equals, when the rate of forward reaction equals rate of backward reaction, and the amount, yeah, concentration of reactants and products become constant. Rate of forward and backward reaction is same लिखना, आपने constant नहीं लिखना. वो मैंने गलती से word लिख दिया constant को, मैंने आगे लिखना word. It was mistakenly written, right? जी हमजा, आप चाहे concentration of reactant लिख लें या amount of reactants लिख लें, एक ही बात है, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है. So when the rate of forward reaction equals rate of backward reaction, and the concentration, yeah, amounts of reactants and products become constant. So we get that the pressure of the equilibrium mixture is increased. The temperature is kept constant. Predict and explain what will happen, if anything, to the composition of the equilibrium mixture. Concentration of PCl3 decreases. हाँ, क्योंकि I think मेरे ख्याल से अगर आप आपने pressure increase किया है, तो system move करेगा more moles less moles में. इसके यहाँ पे 2 moles है, यहाँ पे 1 mole है, तो system तो reverse आ जाएगा. So we can say the position of equilibrium will shift backwards. Position of equilibrium will shift, backward, and the amount of PCl5 will increase. सर ये पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का हम एक्सप्लेनेशन के अंदर नहीं लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन हम लिखेंगे कि वो एक्सप्लेनेशन हम ये लिखेंगे बेसिकली कि why the position shifted backward. वैसे वहां भी लिखेंगे, that's fine, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्सप्लेनेशन क्या होगी? Fewer moles on the left side.
हाँ, The cell with lesser number of moles is supported and PCl5 has lesser number of moles compared to PCl3. exactly. So basically we can say that the reactants have lesser number of moles of gas than products. Okay, the temperature of the equilibrium mixture is increased and the pressure is kept constant. Suggest why the position moves to the right. अच्छा, Where the उसका reaction temperature, is affected. हाँ, Sir, अगर exothermic. टेम्परेचर इंक्रीज करने में सिस्टम फॉरवर्ड चला गया तो इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, क्योंकि उसने आपको बताया ना ऊपर, उसने आपको ऊपर बताया नहीं कि एक्सो है कि एंडो है, उसने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, उसने कहा टेम्परेचर इंक्रीज करने से सिस्टम फॉरवर्ड चला गया, दिस मींस द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन द फॉरवर्ड साइड. Explain why the rate of reaction increases. अब रेट के बारे में बात आ गई है, मतलब अब आप बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स की. फिर kinetic energy. Where the kinetic energy increases or particles collide with each other. Exactly. So Collision basically, increases the unit time. exactly at higher temperature, we'll say, kinetic energy of particles increases. Therefore, frequency of effective collisions increases. सर Sir, can we say हम के और इस तरह की एब्रिविएशंस यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, no. Sir, can we say more particles of energy equal to activation energy? Yes, we can say that as well. You're right. आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ी, तो नाउ मोर पार्टिकल्स हैव एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन, दैट्स व्हाई रेट इज इंक्रीज. तो ये भी ठीक है. Sir, जी सर अगर वो कहता है टेम्परेचर इंक्रीज किया और इक्विलिब्रियम जो लेफ्ट हैंड पर शिफ्ट हो गया तो सर फिर एक्सोथर्मिक होता है. फिर एक्सोथर्मिक होता. एग्जैक्टली. अगर कोई लेस स्पेस प्रोवाइडेड है तो आप उस लाइन, आप यानी कि यहां पे लिख सकते हैं नीचे, यू कैन राइट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. Draw dot and cross diagram for a molecule of PCl3, include only outer shell electrons. तो मेरे ख्याल से PCl3 Cl फिफ्थ ग्रुप में होता है, तो 1 2 3 दूसरी तरह से भी बनाते हैं जिस तरह आप हमेशा बनाते हैं. 5. I'll do that as well. और Cl जो है वो सेवेंथ ग्रुप में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. इस तरह बना लें, नहीं तो इस तरह बना लें. सर ये प्रेफर्ड वे कौन सी होती है? It's absolutely correct. Either way is correct. No preferred. ऐसे बना लें. Okay, the PCl5 reacts with water to form HCl and phosphoric acid. Construct an equation for this reaction. So PCl5 reacts with water to form hydrogen chloride plus H3PO4. Equation balance करने की क्या करें? 4H2 और 5HCl. 4H.5. Brilliant. हादिया, अगर आप बना लेंगे की तो इट्स फाइन, अगर नहीं बनाएंगे तब भी इट्स फाइन. Some students make a key कि ये इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का है और ये इलेक्ट्रॉन Cl का है. It's always very good to show that. But if you don't show it, तो ऐसा नहीं कि मार्क कटेगा, ऐसा नहीं है. But if you show it, it puts a very good impression.
अगर आप इक्वेशन बैलेंस नहीं करते तो आपको मार्क नहीं मिलेगा। सर कोई बैलेंसिंग के आसान तरीका होता है, क्योंकि मुझसे बैलेंसिंग की समझ नहीं आती बहुत कि नहीं बेटा, balance बहुत कैसे- आसान होता है। आपने कोई एक एलिमेंट देखना है जो कि इधर से बैलेंस नहीं हुआ। लेट्स फॉर एग्जांपल ये Cl5 है, यहाँ पे 8 से है, तो आप 5 यहाँ पहले पुट कर दें, Cl बैलेंस हो गए। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि और कोई एलिमेंट जो कि फर्दर बैलेंस हो सकता है। हाइड्रोजन देखिए आप, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 5 है, तो ये 8 हो गए हाइड्रोजन। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूं तो हाइड्रोजन 8 हो गए। अब Cl बैलेंस हो गया, H बैलेंस हो गया। आई थिंक P यहाँ भी एक है, P यहाँ भी एक है, ये वैसे बैलेंस्ड है। अब 4H2 लिखने से ऑक्सीजन 4 हो गए हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है, तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आप पहले हमेशा उस एलिमेंट स्टार्ट करें जो कि एलिमेंट एक इजी होगा बैलेंस करना, फिर वहां से यू कंटिन्यू। I think it's simple mathematics. It has no, you can't say trick. It is just hit and try. Right, sir. Now, guys, food packaging produces lots of waste. This waste includes both plastic and glass. Acha. One of the plastics is the addition polymer. It's polypropylene. Complete the equation by drawing the partial structure of polypropylene. जी गाइस क्या करें? सर ये डबल बॉन्ड हम ब्रेक करेंगे, सर डबल बॉन्ड बना देंगे, Bond just 10. और सर एक्सटेंडेड वो लगा यानी कि हम फिर इस तरह कर लें, ऐसे और जी ऐसे। That's all. सर इसमें The एटलीस्ट one 2 more रिपीट repeat. होने होते हैं। फिर इसमें 2 रिपीट यूनिट नहीं चाहिए हो। हाँ, एटलीस्ट 2 बनाए रिपीटेड। ब्रिलियंट, 2 जरूर बनाए। रिपीट यूनिट्स क्यों चाहिए होते हैं? सर मैं मेंशन स्ट्रक्चर बनाते हुए एटलीस्ट वी नीड टू मेक 2 रिपीट यूनिट्स। सर इसमें पार्शियल ब्रैकेट स्ट्रक्चर बना मींस अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। सर इसमें ब्रैकेट बना के एन नहीं लगाएंगे। It isn't mentioned. आप ब्रैकेट लगा के एन लगा भी दें, इट डजंट मैटर, नहीं लगाएं तब भी डजंट मैटर। अगर रिपीट यूनिट नहीं बनाते, क्या 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 अगर कहना चाहते हैं? रिपीट यूनिट नहीं बनाते एन लिख देते हैं। मैं समझा नहीं आपकी बात। सर वो कह रहे हैं कि अगर सिर्फ एक मतलब 2 यूनिट्स ना बनाए, खाली एक बना के एन लिख दें। अगर आप एक बना के भी एन लेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि उसने आपको स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया ना। तो अगर आप एक भी बना लेंगे तब भी इट्स फाइन। फिर मैंने एक सवाल पूछा था जी सर, वो आयोनिक इक्वेशन जो लिखवाई हुई थी आपने नोट्स के अंदर, वो याद करनी है हमें सारी, या फिर Yes. बाद में एग्जाम के अंदर हमें जैसे कैसे यानी कैसे कर ले? सारी याद होनी चाहिए। Okay, Okay. plastic waste is disposed of by combustion. इसको incineration कहते हैं। जब हम प्लास्टिक वेस्ट को आग लगाते हैं तो उसको incineration कहते हैं। Incineration, INCINERTAION, incineration. Okay, they construct an equation to show the complete combustion of polypropylene. Use the empirical formula in the equation. वो कह रहे हैं empirical formula use कर लो, CH2 तो oxygen, and it gives you क्या देगा? Carbon dioxide and water. I think 1.5 लाख balanced. तो यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा आपको, तो आई थिंक इज 1.5। ब्रिलियंट, ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे। सर इस इक्वेशन की फिजिकल स्टेट नहीं लिखनी? नहीं, उसने कहा ही नहीं है। जी Zainab, we are talking about the redox equations in the acids versus salts redox chapter. हम उन ionic equations की बातें कर रहे हैं जो कि मैंने आपको लिखवाई थी acid versus salts में, redox में। Some plastics are biodegradable. Suggest an advantage of a plastic that is biodegradable. They rot away. used again. It does not cause land pollution. हाँ, basically biodegradable plastic जो है वो decompose कर जाएगा और land pollution cause नहीं करेगा। It will decompose. सर बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनके ऊपर बैक्टीरिया लाइक अटैक कर सकता है। Yes, and will not cause land pollution. Biodegradable is which can easily decompose. Okay, the partial structure of a condensation polymer is shown.
वैसे मुझे बताएंगे which polymer is this? Is it a polyester or polyamide? Polyester, sir. Polyester. ये इसमें आप देखिए इसमें ester group लिखा आप. You can see an ester group. It's a polyester. अच्छा, मुझे जरा हाईलाइट करते हैं कि इसमें एस्टर बॉन्ड्स कौन कौन से हैं. ठीक है, एस्टर बॉन्ड्स कौन कौन से हैं. तो मेरे हाथ से एक तो ये एस्टर बॉन्ड है और ये एस्टर बॉन्ड बनना चाह रहा है. ये भी एक एस्टर बॉन्ड बनना चाह रहा है. तो जब आपने मोनोमर बनाना होगा तो जहां पे एस्टर बॉन्ड है वहां से आप बेसिकली इसको ब्रेक करेंगे ना. तो मेरे हाथ से ये एक मोनोमर है और ये एक मोनोमर है और मोनोमर सेम ही दिख रहा है आपको, यानी कि ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बेसिकली एस्टर बॉन्ड्स के दरमियान. तो आपने करना क्या होता है, हाउ टू मेक इट. तो इससे वापस OH लगा दें, इससे वापस H लगा दें, यू मेक द मोनोमर वापस. क्योंकि आपको एक सेकेंड, क्योंकि आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके आपको एसिड देते हैं. ठीक है, अगर आपने एस्टर से वापस बनाना हो अपना मोनोमर तो वापस कार्बोक्सिलिक एसिड और वापस अल्कोहल बना दें. तो CO से OH लगा दें, O से H लगा दें, तो यू विल मेक द रिस्पेक्टिव अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. जी सर पार्ट 1 में आपने हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे उसके साथ? लाजमी नहीं है सर, ये समझ नहीं लगी, दोबारा समझाएंगे आप ये वाला पार्ट? सो बेसिकली आपको पहले यहाँ पे एस्टर बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, आपको पहले एस्टर बॉन्ड आइडेंटिफाई करने हैं. जो मैंने ये मैंने एस्टर बॉन्ड आइडेंटिफाई किए हैं. ये एस्टर बॉन्ड है, ये एस्टर बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है. जब ये पॉलीएस्टर बना होगा तो ये वाला एस्टर बॉन्ड बना होगा ना. अब जब आप वापस से मोनोमर बनाएंगे तो आप ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे ना. मैंने वही बॉन्ड ब्रेक कर दिए, ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, ये बॉन्ड ब्रेक कर दें, ये बॉन्ड ब्रेक कर दें. जब ब्रेक करेंगे तो एक ये बनेगा चंक, एक ये बनेगा चंक. तो ये एग्जैक्टली सेम चंक्स नहीं है, मतलब है एक ही मोनोमर है. उसने भी कहा एक ही मोनोमर है. तो एक CO है, एक CH2 है, एक O है. तो CO से वापस OH लगा दें, क्योंकि जब आपने एस्टर बनाया होगा तो आपने CO से OH निकाला होगा ना और O से H निकाला होगा. तो वापस मोनोमर बनाने के लिए वापस डाल दें OH और H. सर ये मतलब कि अल्कोहल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है? हाँ, यस, इट्स एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बोथ. तो फिर तो सर ये एस्टर लिंकेज नहीं बनाना चाहिए था हमें फिर यहाँ पे? नहीं, ये मोनोमर अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एस्टर दे रहा है ना. अच्छा सर, वो जो डायोल वाला था. हाँ, ये बेसिकली अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके दे रहा है. ये इससे रिएक्ट कर गया, ये H निकल गया, ये OH निकल गया, तो ये वाला नहीं बनेगा पॉलीएस्टर. ये समझ आ गई. तो ये मॉलिक्यूल अपने मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है. और मैंने आई थिंक ये आपको करवाया भी था जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं. This is a hydroxy carboxylic acid, Mustafa. Hydroxy. It has alcohol and carboxylic acid both. अच्छा, कितने से रखे? अभी one question is left. So, जी बेटा, CO से OH लगाना होता है, याद रखें हमेशा. CO से आपने OH लगाना होता है और जो अल्कोहल का O है उससे आपने H लगाना होता है. D पार्ट नहीं करना, D. My next class has started. ठीक है, हम कल इस तरह करेंगे, DE करेंगे और इसका क्वेश्चन 10 कर लेंगे. ठीक है, लेकिन आप इस तरह कीजिएगा कि आप ये सवाल आज कर लीजिएगा प्लीज. ठीक है, ताकि हम कल इसको फर्स्ट 5 मिनट्स इसको रैप अप करेंगे एंड विल डू MCQs tomorrow. So tomorrow we have MCQs. ये DE और क्वेश्चन 10 आज आपने कर लेने हैं ताकि हम जब कल इसको डिस्कस